आपको है ना स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ और सिक्योरिटी में भी देती हूँ पार्टिसिपेंट को कि शेयर स्क्रीन कर ले। ठीक है ना, यू कैन शेयर स्क्रीन, नॉट एन इशू। Hello everyone, this is me Rakhi Vyas from Jadhavar Group of Institute, and as we know, we always come up with the new topic. So yes, let's learn coding with Miss Priyanka Deoo. So she is kids coding expert. आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका जी जाधवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से। और बस इट्स ओवर टू यू नाउ। आज बच्चे बहुत एक्साइटेड है कोडिंग सीखने के लिए। तो एक्चुअली मैम ये कोडिंग होता क्या है? यस यस डेफिनेटली। सो बेसिकली हम कोडिंग होता क्या है ये बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, लाइक वी आर टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज। एक दूसरे की भाषा हम समझ सकते हैं, राइट? बट व्हाट इफ वी वांट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स को हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है। जैसे रोबोट है, रोबोट को हमें इंस्ट्रक्शन देनी है, तो सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, right? So that we can communicate. So वैसे coding is a mediator which translate the what we can say the machine, like we can communicate with the machines with the help of coding and programming languages, right? ये हो गया बेसिक कोडिंग। उसके अलावा होता है कि इट्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सो दैट कंप्यूटर डे टू डे लाइफ में हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? we like you have bought a robot and you want him to communicate with you. So what you have to do, you have to connect with the computer and you have to give some instruction using some softwares, some applications so that the robot will be live. Okay, so coding is nothing but a set of instructions which we have to give to the computer to perform specific task. And these instructions are communicated using a computer language. So there are वैसे तो मार्केट में बहुत सारी computer languages है, but for kids we start with block based coding, जहाँ पे you just have to connect the blocks in a ordered manner so that you will get a perfect output. Okay, and to write these computer commands we need to understand the algorithm first. Let's see an example. I'll share a screen for a second. So if you see on my screen, there is an image. Right. So this is a human being and it's a robot. Okay. And I want this robot to follow the human instructions. एक basic example लेते हैं, जैसे I want the robot to brush my teeth. So is he will be able to brush my teeth if I ask him? Definitely no, right? क्योंकि उसको नहीं पता है कि what I'm asking, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है because I have not given him instruction in his understandable language. So what I have to do, first I have to write an algorithm. ये robot को मुझे कैसे work करवा के लेना है, उसके लिए मुझे कुछ algorithm लिखना पड़ेगा. And that algorithm is nothing but it's step-by-step instructions. And वो step-by-step instructions को we have to convert into the coding language using different programming languages. Okay, so first instruction I have to give to the robot is like you have to go to the wash basin and you have to pick up the toothpaste and you have to open it. This is the first instruction. This is second instruction. Then you have to apply it on your brush and make it big. Just a second. Okay. So you have to apply it on your brush. Then you have to hold the brush like this only. Then you have to open your mouth and put the brush inside your mouth. You have to move the brush right, left, up, down. Then later you have to gargle and the robot done with the brushing activity like this. So these are nothing but the step-by-step instructions, and all together this set of instructions we call it algorithm.
algorithm. So it's a basic form of instructions. Now we have to convert all these instructions into the computer understandable language. So ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इससे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि C++ हो गया, जावा स्क्रिप्ट, अभी पाइथन बहुत चल रहा है, डेटा साइंस के लिए पाइथन यूज करते हैं, मशीन लर्निंग वहाँ पे भी हम पाइथन ही यूज करते हैं. बट फॉर किड्स टू स्टार्ट विद द बेसिक कोडिंग थिंग्स वी ऑलवेज स्टार्ट विद ब्लॉक बेस्ड कोडिंग. सो ब्लॉक बेस्ड में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. The first platform we introduced to the kids is in it's Scratch programming. Okay, so yes, सारी instructions we will convert it into those computer understandable language using Scratch application. And even if we connect a robot, the robot will be able to do that activity. Okay, so ये हो गया algorithm and introduction to the coding. इसके बाद होता है like many parents ask us like why our kids should learn coding at such early age. उसके बहुत सारे benefits है, उसके बहुत सारे advantages है. जैसे कि बोला जाता है if you teach your kids multiple languages at an early age, it helps them to boost their problem solving ability. So as I said, coding itself is a different language. It's a computer language. So it's a kind of a different language only. So it definitely is going to help you like to boost problem solving ability in your kids. Then creativity is highly encouraged in this in this programming languages, in this coding courses. So ऐसे बोला जाता है, we have two parts of our brain, right brain and left brain. So जो भी हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो भी हम स्कूल मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज होता है, वो सारे लेफ्ट ब्रेन के काम है. सो राइट ब्रेन को एनहांस करने के लिए हमें बहुत कम चांसेस मिलते हैं. सो दिस राइट ब्रेन के काम क्या क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, क्रिएटिविटी होता है, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, ये सारी चीजें राइट ब्रेन की होती है. सो दिस कोडिंग एंड दिस प्रोग्रामिंग थिंग्स हेल्प्स टू like enhance the right brain, as it is a part of a creativity. Coding itself is a creative thing and it's a different language as well. So इससे बहुत सारे benefits है. Then it helps to visualize abstract concepts. It helps children become confident problem solver. Then children will learn to code, understand how to plan and organize the thoughts as well. So it's a complete STEAM package, we can say. So STEAM stands for science, technology, engineering, and mathematics. So it's a combination of all those things. Sometimes we have to use science while writing a program. Sometimes we have to use only technology, or along with the science, we have to use technology. Then engineering is also involved while learning coding. We have to use many engineering concepts as well. Then mathematics is it's a part of coding itself. So ये पूरा STEAM जो भी है that we use while learning coding. So if we introduce our kids at an early age to the STEAM education, STEAM pattern, so it definitely going to help your kid in long future. Okay, then there are so many examples, like you can see some pictures on my screen. Mark Zuckerberg, he's a Mark Zuckerberg, and he's a Bill Gates. So Mark Zuckerberg got introduced to the coding at the age of 10 years only. When he was 10 years old, he got introduced to this coding and technology thing. That may be the reason like he was able to create a Facebook like platform. अभी ये Facebook के ओनर है, फाउंडर है. So ये एक कारण हो सकता है कि why like how he have developed this Facebook platform. Then Bill Gates तो सबको पता है, is owner founder of Microsoft. He also learned coding at the age of 8 years only. So ये उनको जितने जल्दी हम ये चीजें टेक्नोलॉजी थिंग्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उतना उनको
ऐसे बोला जाता है किड्स who code in their early age test 75% higher in logic because in coding we use logic only. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज एक कार गेम है, तो हर एक का कार गेम, रेसिंग गेम, ये सब इमेजिनेशन अलग अलग होता है। कोई बच्चे रेड कलर की कार चूज करेंगे, कोई बच्चे पिंक कलर की कार चूज करेंगे, कोई मतलब कोई बच्चे वो जो हमें रोड ड्रॉ करना है रेसिंग कार के लिए, वो रोड कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी अलग अलग होता है। कोई पौधे दिखाएंगे आजू बाजू, रास्ते के आजू बाजू में कोई बिल्डिंग्स दिखाएंगे, तो ये इट्स एन इमेजिनेशन। ये उन्होंने कहीं तो भी देखा होता है या फिर नहीं देखा है तो भी वो इमेजिन करके वो चीजें ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके हिसाब से वो कार को कैसे मूव करना है, तो क्या कमांड देंगे तो कार आगे जाएगी, अगर ये कमांड देते तो कार राइट को जाएगी, लेफ्ट को जाएगी। तो ये सारा पहले उनको इमेजिनेशन करना होता है। सो इससे क्या होता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ता है बच्चों का। सो सब्सिक्वेंटली इट्स ए वर्क ऑफ राइट ब्रेन, so it helps to develop the right brain as well. Okay, then और एक इंडियन बच्चा है तन्मय बख्शी करके, he also learned coding at the age of started learning coding at the age of 5 years only, and at the age of 9 years he developed his first iOS app. At the age of 12 years uh, he was been called by the Google USA because he was the youngest IBM Watson programmer in the world. So ऐसे बहुत सारे examples है how this coding can help your child in their future. So ये हो गया सब उसके benefits की, coding क्या होता है, उसके benefits क्या है, बहुत सारे examples भी हमने देख लिए. So what I think is the early, if in few years we will be learning coding just like reading and writing. ये common होने वाला है, मतलब compulsory होने वाला है. It's a mandatory skill in coming age. And wondering why we didn't start it earlier. And it is said by Mark Zuckerberg. Right. And even we can see the new education policy. Even in that, they have endorsed that they are going to make coding as a part of their day-to-day syllabus. Right. Along The with things science, are maths. telling, and the Mark Zuckerberg has mentioned is already we have introduced in new education policy as well. Right, exactly. Just like science, maths, coding is going to be your Part of compulsory your subject. curriculum. Yeah. Yes, exactly. So ये हो गया सारा theory part. हमने algorithms भी देख लिया, what is algorithm, what is coding, and why it is beneficial. Now we will see some practical. So we will create a game on a Scratch platform. I'll share my screen again. Great. Even I am excited to see how we are going to make it. Yes. So it's a first basic platform, and we start introducing coding to the kids using this platform only. यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोड, कॉस्ट्यूम, साउंड्स, देन यहाँ पे दिस whole thing is called a stage. So you can compare this with the movies, like how movies are created. पहले डायरेक्टर को क्या करना पड़ता है, पहले डायरेक्टर को एक्ट्रेस लेने पड़ते हैं, राइट? फिर वो एक्टर्स को उसको कॉस्ट्यूम्स देना पड़ता है, देन डायरेक्टर हैव टू चूज द बैकग्राउंड लाइक सीन्स, डिफरेंट सिटीज में जाके उनको वो सीन्स फाइनल करने पड़ते हैं। देन उसके बाद एक्टर्स को वो डायलॉग देते हैं, फिर एक्टर्स बोलते हैं, तो एक मूवी तैयार हो जाती है। फिर तो सेम थिंग हमें यहाँ पे करनी पड़ती है। यहाँ पे ये जो मैंने रेड बॉक्स किया, दैट इज अ स्टेज. You have to choose the actors using this option. To choose the actors, but we call it sprite in this technical language. So we have to choose sprites here. Suppose I'll choose a ballerina. So she's my actor now. And I'll choose, first I'll choose costumes of the ballerina using this option in this costume tab. So the ballerina have different costumes. Suppose I'll choose this. Okay. And then I have to choose the scene, or you can say the background. So I'll go to choose a backdrop. And let's say
this one, right? Now I have to give some instructions, or in movies language, we can say I have to give some dialogues to the actor. Yeah. So I will say, when I press the green flag button, this button, then ballerina should move or ballerina should speak. So I'll say, when I press the green flag, you have to move 100 steps to the right. Then you have to say something. Hello, I am ballerina. Okay, and again, the ballerina should go to the starting position in left side. So I'll say -100, move -100. Let's see the output. Okay, right? So when I press this green flag button, ballerina goes to the right side here. Then she says, hello, I'm ballerina, and come back to the left side again. Right? So it's like we have created a small movie where we have an actor, we have a background scene, we have options to change the costume of the actor. Suppose I'll choose this option now, this costume, and we have dialogues assigned to the ballerina. Right? Now I want her to dance. So what I will put, I'll just go here and I'll say next costume. So she's going to change the costumes. So every time she's moving, every time we press the green flag, she changed her costume. Right? So this is how it works. You can like imagine it with the movie creation thing. Movie कैसे बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है. Same thing we can apply here. So ये हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल. अभी हम बनाते फॉलिंग बॉल गेम. उसमें क्या होगा, एक बार मैं आउटपुट दिखा देती हूँ. We'll do it again. You can even call it dodgeball game. इसमें क्या होता है कि हमें दो कैरेक्टर्स लिए. We have a Giga, red hair guy name is Giga, and this is a ball, and we have two variables, lives and score. So जैसे मैं green flag press करती हूँ, the ball starts falling down, and we have to save our Giga from those falling ball. The Giga should not touch the ball. Wow. Means such game we can create, right? Yes, yes. Now I'm going to teach how to create this type of game. So what happens if ball touches the Giga? You can see the lives are one now, is one Yeah. now. Previously it was 3. And as soon as the ball touches the brown surface here, Game over. the surface, the score increases by 5. And once the lives become 0, the life 0 हो गया तो game over हो गया. अच्छा. Okay? So ये चीज हम बनाएंगे. So, which one is the youngest student you had who made 5 years. such kind of game? 5 years old. 5 years old. Yes. Sure, उसका पक्का आपने देखा था? Yes, yes, Date yes. of birth. Okay. Yes, yes. She was That's 5 great. years old, and she was from Saudi Arabia. Oh, that's great. Yeah. Means at Even international she's level. yes, yes. And even she is planning for the next courses as well. मुझे उसको बताना पड़ता है कि नहीं बाबा अभी 6 years के हो जाओ फिर आगे फिर का करो करेंगे. आपका. हाँ. Otherwise, parents are also like interested कि बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, उसके सारे levels पढ़ा दो. हाँ. And due to this pandemic and COVID situation, I think the parents are turned towards this no online teaching Yes, yes, and technology all thing, platforms, yes. right? Yes, yes. ये अभी बहुत कॉमन हो गया पेरेंट्स के लिए. बच्चे पूरा कंप्यूटर हैंडल कर लेते हैं, जूम ज्वाइन करना, मीटिंग लेफ्ट करना, म्यूट Right, अनम्यूट right. करना. तो उनके लिए ये मतलब उनको और एडवांस सीखने की जरूरत है. तो ये कोडिंग परफेक्ट थिंग है उनके लिए.
Yeah, even I found कि offline शुरू होने के बावजूद भी they are focusing if something we are getting at our place, the Yes. safest place that is our home. So Hmm. online learning में काफी interest बता रहे parents. Yes, right. ओके सो अभी हम बनाते वो फॉलिंग बॉल वाला गेम. सो सबसे पहले हम लेंगे कैरेक्टर और स्प्राइट. वी कॉल इट, टेक्निकली उसको स्प्राइट बोलते हैं. लेट्स चूज Giga only, or we can choose any other, or let's say Goblin. I'll choose this Goblin. Okay. And दूसरा कैरेक्टर था बॉल. तो बॉल हम ये बलून ले लेते हैं. बलून बहुत बड़ा दिख रहा है. We will change its size. I'll make it 50% only. ये छोटा हो जाएगा. गॉब्लिन को भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं. तो ये जो है यहाँ पे स्प्राइट, उसके आगे लिखा है गॉब्लिन, देन शो हाइट साइज. ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं. हर एक स्प्राइट को उसके प्रॉपर्टीज होते हैं. सो वी विल चेंज द साइज ऑफ अ गॉब्लिन एज वेल, मेक इट 80%. वो थोड़ा छोटा हो जाएगा. Then this x and y are nothing but the exact location of the sprite. This is the red line is y-axis, and the yellow line I have drawn on the stage is x-axis. It's x and it's y. The standing line is y. So the exact location the goblin is standing is mentioned here. X is minus 13 for goblin and y is negative 143. Okay, if I change the position of a goblin, I'll put it here. So iska x and y change ho gaya. So it's, these are x and y are changing. As soon as we change the character's position, x and y changes. Right? Same thing with the ball. If we move the ball, the x and y changes. Okay. So we have chosen two characters. Now we have to choose the background. Background, let's say, I'll choose this only, blue sky. Okay. Now, let's see the costumes, what costume options we do have for the goblin and the ball. So for goblin, we have 4 costumes. I want to use all those 4 costumes. So what I will do, I'll just say next costume. So every time I'll press the green flag. So it's not necessary to use green flag always. We can use a space key or any other key as well, like to, begin the program. So these are the event commands. This event, inside this event block, you can see multiple commands are there. These commands are nothing but the triggering to the program. Like using first, while starting the program, you have to use any of the event command to start. Okay, so the for this I will use a space key. जैसे मैं space key button press करूंगी, from my keyboard, game will start. Okay, I'm pressing the space key, but nothing is happening because we have not written anything below that. We have not connected any other block to the space key press command. So I will say looks and next question. You can see, you can observe the goblin. I'm pressing the space key, you can observe the goblin. Goblin is changing his costume. So it looks like he's talking, he's saying something. Right? Then we want this goblin to move right when I press the right arrow key from my keyboard, and I want him to move left when I press the left arrow key from my keyboard. So I have to use the same event again when right arrow key pressed and when left arrow key pressed. So when I press the right arrow key, the goblin should move to the right. So I will say move 100, not 100, 10 steps. So I'm pressing the right arrow key. It's moving. And for left arrow, I'll say move negative 10. Let's see what happens. So when I'm pressing left arrow key, the goblin is moving to the left, right, left. But he's not changing the costume.
So I have to press space key as well as right arrow key or left arrow key. So it's confusing. So instead of using the space key, I'll just put this next costume here as well as to the left arrow key. When right arrow key pressed, next costume, move 10 steps. When left arrow key pressed, next costume, move minus 10 steps. So I guess this 10 is big number. I'll make it 5 for both, minus 5. So it's moving slowly, right? Even if you want to change the color of this costume, you can go to the costume and you can change it. So let's say I'll choose other color for the hat like thing. I'll make it this color. Right? And change this pant color. Get even the shoes color. Okay. Now the next thing, like we are done with the goblin side. We are done giving commands or dialogues to the goblin because we want the goblin to move only right and left when we press right and left arrow key. Right? Now we have to work on the ball. This ball should fall down. When we press, let's say, green flag. When we press the green flag, the ball should fall down like this, slowly. Okay? So, I have used an event when green flag click. So to make it fall down, we have to choose a range of X and Y because the ball is going to, this balloon is going to fall sometime from this location, sometime from this location, sometime from this location, sometime from here, sometime from here. So it is going to fall from this range, this complete range. Sometimes it is going to fall from this side, this. So the balloon can fall from any of this location on this range. So what I will do, I'll give an range option. I'll go to the motion. I'll use a command set X. I'll set the X to the random position. So there is a command called pick random from sensing. Sorry, operators. I'll use this pick random. So what I'm doing this as I drawn X and Y previously on the screen. The standing line is X axis and this slipping line is Y axis. X axis. So we have to choose the location of the balloon from this range of X axis. So I will do. Wait, I need to delete all this first. Yeah. So I'll keep my balloon here. So you can check the X position. X minus 232. And this is the other end of the range is positive 224. So I'll write down this range here, 224, and it was negative 232. So I'll press the green flag. See, whenever I press the green flag, the balloon is changing its position from the X range we have provided, negative 232 to 224. Right? Now we have to give Y position as well. Let's say I'll set the Y to 148. Okay. Now I want this balloon to fall down. So when I say I want it to fall down, it means it should fall down corresponding to the Y axis. Right. So हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये बलून को फॉल होना है धीरे धीरे धीरे, मतलब
नीचे 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 उसको आना है y एक्सिस के पैरेलल। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे हमें उसको नीचे लाना है, मतलब वी हैव टू चेंज द y वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज y, there is a command called change y by 10, suppose by 10, I'll press the green flag, still it's not falling down because ये basically वो balloon fall हो रहा है but it is falling only one time, and as soon as we press the green flag again it goes back and falls down only one time. But we want it to fall multiple times unless and until it reaches to this brown surface or it touches the goblin. So what we have to do, we have to put this command into the control command called forever. Forever is nothing but a loop. So whatever command we put inside this forever, it is going to repeat it forever unless and until we stop it. Okay, now you can see. But when we say plus 10 and we want it to fall down, it means we have to give the negative value. So I'll say negative 10. See, the ball is falling down. Right? Every time I press the green flag, it chooses the range of x position of the balloon from this range, negative 232 to 224, and y is 148. And in forever, we said change y by negative 10. So negative 10 मतलब वो 10 times नीचे 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 आ रहा है, बट वो फॉरएवर में हमने वो कमांड डालने की वजह से वो फास्ट ऐसे दिख रहा है कि इट्स गोइंग टू फॉल डाउन। राइट। सो उसके बाद हमें अभी यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये यहाँ पे आके स्टक हो रहा है, मतलब यहाँ पे आने के बाद वो हाइड होना चाहिए, फिर से ऊपर जाके नीचे आना चाहिए। राइट। सो हमें उसके लिए भी ये कंडीशन हो गया कि ये यहाँ पे आके रुक रहा है, तो ये कंडीशन हो गई। उसको हमें ओवरकम करने के लिए वी हैव टू यूज अ कमांड कंडीशनल स्टेटमेंट कॉल इफ देन। सो ये इफ देन उसमें हम लिखेंगे इफ इट टचेस दिस ब्राउन कलर, सो एग्जैक्टली ये ब्राउन कलर हमें चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। I'll choose a color picker and I'll choose this exact color, this one. Okay. If this balloon is touching this brown surface, then क्या होना चाहिए, ये फिर से हाइड होके उसके स्टार्टिंग पोजीशन पे जाके फिर से वही रेंज x एंड y का रेंज लेके नीचे गिरना है उसको। तो हम वही करेंगे फिर सेट x, सेट y, सेट y I will say 148 एंड जो रेंज था वो सेम रेंज I will select. Okay, but still it's not working because we have not connected this block to any other block. So I'll put it again, it's a repetitive process. ऐसे नहीं कि एक बार वो बलून नीचे आ गया, हाइड हो गया, तो वो अपने आप ऊपर जाके फिर से नीचे गिर गया, ऐसे नहीं है। इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस। सो जितनी बार हमें वो रिपीट करना है, हमें वो जब तक हम स्टॉप नहीं करते तब तक रिपीट होना चाहिए, इसलिए वी हैव टू पुट इट इनसाइड फॉरएवर। So now it looks like automatic. The ball is falling down, down, down. It touches brown surface. It goes up, again falls down. एक ही बॉल है ये, ऐसे नहीं कि उसकी कॉपीज है और मल्टीपल स्प्राइट है, एक ही बलून है। वो अपने आप अभी वर्क कर रहा है बिकॉज वी हैव पुट होल थिंग्स इनसाइड फॉरएवर। सो अभी ये फॉरएवर वर्क होता रहेगा अनलेस एंड अनटिल आई स्टॉप दिस प्रोग्राम। राइट। Those who are not belonging to IT sector or any this coding sector ना, this is kind of miracle for us. अरे भाई ये कैसे हो रहा है? How does it work? It is like that only. नहीं, एक बार हमें ये x एंड y एक्सिस अगर समझ में आ जाते हैं ना, स्टैंडिंग लाइन इज y एक्सिस। इवन ये चीज हमने मैथ्स में भी पढ़ी है, x एक्सिस y एक्सिस। Graph whenever we solve graph.
राइट। तो ये एक्स एंड वाई क्लियर हो गया ना, सो लाइक यू कैन क्रिएट एनी प्रोग्राम लाइक इट्स अ बेसिक It's ऑफ really दिस। wonderful to keep whichever character we need, उसे हम लगा सकते हैं। हाँ, such kind of background हमें जैसे चाहिए हम वो लगा सकते हैं, और उसको गेम्स बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं। So it's really amazing. Means I think the students are going to enjoy this session. यस यस एग्जैक्टली। तो इसी में ही मतलब इमेजिनेशन बहुत होता है, जैसे कि अभी मैंने ये बैकग्राउंड लिया, कई मतलब चार बच्चे भी मेरे सामने, तो चारों की इमेजिनेशन अलग अलग होता है। कोई अलग टाइप का बैकग्राउंड लेगा, किसी के दिमाग में क्या चल रहा होता है तो वो उस Right. टाइप का बैकग्राउंड लेगा, उस हिसाब से वो कैरेक्टर्स को चूज करेगा, उस हिसाब से वो कैरेक्टर्स को कमांड्स देगा। अभी मैंने ऐसा भी होता है कि ये हमने यहाँ पे कितनी चीजें वर्क की है, सिर्फ बॉल फॉल डाउन हो रहा है और ये गॉब्लिन राइट लेफ्ट घूम रहा है, तो इसके लिए मैंने इतना सारा कोड लिखा है, ये गॉब्लिन के लिए इतना एंड बलून के लिए इतना। तो बच्चों को इतनी आदत हो जाती है कि ये 2-3 लाइन का कोड लिख के भी वो उसको सेम थिंग मतलब सेम आउटपुट ला सकते हैं, ऐसे भी होता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट लॉजिक एंड इमेजिनेशन, Yes, yes. राइट। सो अभी ये कमिंग बैक टू द गेम अगेन। सो ये एक पार्ट तो हमारे मतलब ये पूरे गेम में ना एक इट्स लाइक अ प्रॉब्लम, so we have to Hmm. break this problem into multiple pieces and we have to work on each piece of this problem. So सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या आया था कि you have to make a falling ball game. So उसमें Right. 2 कैरेक्टर होने चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, राइट। तो वो एक प्रॉब्लम हमने सबसे पहले वो एक पीस, प्रॉब्लम का पीस, छोटा सा पीस हमने सॉल्व कर दिया बैकग्राउंड एंड स्प्राइट्स लेके। उसके बाद दूसरा पीस ऑफ प्रॉब्लम था कि वी हैव टू मूव द गॉब्लिन राइट लेफ्ट व्हेन वी प्रेस द राइट एरो की, लेफ्ट एरो की। तो Hmm. उसके लिए हमने उसको ये कमांड दे दिए गॉब्लिन में जाके, when left arrow key pressed, when right arrow key pressed, you have to change the costume and move to that particular direction, right? Next was the balloon should come from any of the location. कभी यहाँ से आना चाहिए, कभी यहाँ से आना चाहिए, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। तो ये मतलब ये पूरे रेंज में से कहीं से भी वो उसको गिरना है नीचे। सो वी Right. हैव यूज कमांड फॉर दैट टू सेट एक्स। सो उसको Hmm. पिक रैंडम दे दिया कि एक एक्सट्रीम राइट साइड का, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड का, उसके बीच में से कहीं पे भी यू कैन चूज। तो उसको बलून पे ही छोड़ दिया हमने, तुम्हें कहीं से भी चूज, कौन सा भी चूज करना है बिटवीन दिस रेंज, एक्स की ये रेंज में से। और वाई का हमने फिक्स रखा, अगर वाई भी हम पिक रैंडम देते तो बॉल यहाँ से भी आ सकता था, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी, कहीं से भी आ सकता था, इसलिए बट हमें वैसे नहीं चाहिए कि वो एक ऊपर से नीचे ही आना चाहिए, या फिर लेफ्ट से नीचे नहीं आना चाहिए, राइट से नीचे नहीं आना चाहिए, बीच में से ही कहीं से नीचे गिरा, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने वाई को फिक्स रखा है। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम था कि वो नीचे गिरना चाहिए, Right. इसलिए हमने लिखा चेंज y बाय -10। अगर यहाँ पे हम +10 लिखते तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। जब भी हम इसको y एक्सिस बोलते हैं, इट्स ए y एक्सिस, तो उसमें भी 2 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये ऊपर वाला जो सेक्शन है ये पॉजिटिव y है, एंड नीचे वाला सेक्शन है नेगेटिव y। So when we say the balloon should fall down, so we have to choose the negative value. So हमने इसलिए बोला change y by -10। So वो धीरे 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 नीचे नीचे आता रहेगा। और ये फॉरएवर में डालने की वजह से क्या हो गया, वो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि वी हैव पुट इट इनसाइड फॉरएवर, वो नीचे आता ही रहेगा। ये हो गया तीसरा प्रॉब्लम, पीस ऑफ प्रॉब्लम पे हमने वर्क कर लिया। उसके बाद था कि बलून यहाँ पे आके स्टक हो रहा था, ब्राउन सरफेस पे आके वहीं पे रुक रहा था, तो वो दिखने को अच्छा नहीं दिख रहा था। तो हमने क्या किया, वो बलून को वहां से जैसे ही वो ब्राउन सरफेस को टच करता है वैसे ही उसको गायब होना है, ऊपर जाके फिर से गिरना है, फिर से ब्राउन सरफेस को टच करके गायब होना है, फिर से ऊपर जाके नीचे गिरना है। तो ये चीज हमने कंडीशन, इसको हम बोलते हैं कंडीशन, कि ये जब भी इसको टच होगा तो उसको क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन। तो उसको हमने डाल दिया इफ देन, राइट। तो अभी अभी मेन प्रॉब्लम पे हमें वर्क करना, मेन पीस ऑफ प्रॉब्लम है
कि what happens when this balloon touches goblin. तो इसमें दो चीजें, एक तो गॉबलिन को भी फर्क पड़ेगा अगर बलून टच करता है, और बलून को भी फर्क पड़ने वाला है जब वो गॉबलिन को टच करेगा. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले हम बलून के हिसाब से सोचते हैं बलून का क्या होगा when it touches the goblin. So it's again a condition. So we will write down the same thing we did for the brown color surface. यहाँ पे भी हम वो कंडीशन लिखेंगे. जितनी भी कंडीशंस आती है वो सारे हमें लिखनी है if then. If balloon touches goblin. So we have a command touching goblin. Then what happened? What happens to the balloon? Balloon hides himself and again come from the top to fall down. So same thing. मतलब कंडीशन थी डिफिकल्ट कि बलून के साथ क्या होगा व्हेन इट टचेस द गॉब्लिन, बट वी मेड इट सिंपल. उसको क्या करना है, फिर से वही सेट एक्स सेट वाई. यहाँ पे जाके आई सी सेट एक्स सेट वाई, सेम थिंग, same location 148y and pick random x from the same range. See, I'll keep the goblin here. See, the goblin is touching, sorry, the balloon is touching the goblin, but balloon gets hide and come from the top again. But nothing is happening with the goblin because we have not written anything from the goblin's point of view. We have just completed with the balloon point of view कि balloon को क्या होगा when it touches the goblin as well as when it touches the brown surface. अभी हमें goblin के बारे में सोचना है. It's the next piece of problem. तो यहाँ पे क्या होगा, goblin को अगर ये टच करता है balloon, तो goblin की life -1 होनी चाहिए. So we have to assign him 3 lives or 5 lives, and जब भी बलून उसको टच करेगा तो उसकी लाइफ -1 होनी चाहिए फॉर ईच बलून टचिंग द गॉब्लिन. तो ये कंडीशन के लिए सबसे पहले तो हमें लाइफ का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा. वेरिएबल क्या होता है कि इट स्टोर्स द टेम्पररी वैल्यू and it changes it's like we can change the variable value as and when required, or we will write condition for that also. So I'll make a variable, I'll name it lives. You can see this lives are there on the stage now. Okay, so initially I will assign 3 lives to the goblin, set lives to 3, correct? And now I have to write a command. When this balloon touches the goblin, the life should get -1. Again, ये सुनने में बहुत बड़ी condition लग रही है कि when what happens when balloon touches the goblin, but it's very simple. This condition is already written here. Touching goblin, change x and change y. Also change the lives by -1. Let's see what happens. I'll purposely touch the balloon. See, the lives are 0 now because 3 times the balloon have touched the goblin. Now the lives are going -1, -2, -3 because we have not written that command that we have to instruct the this whole thing. When lives become 0, you have to stop. You have to make a game over, right? So what I will do, I'll take one more green flag, or otherwise I'll write here in backdrop side, I'll take a event when green flag click, and I'll put a control command, wait until the lives are equal to 0. जब live 0 हो जाएंगे, then you have to stop. There is a command stop all, and we have to create one more backdrop for the game over. So I just duplicate the same and I'll write down game over.
Here. I'll make it big. Okay. So now we have two backdrops. When you click on a backdrop, you can see this is the normal one, which we were working on, and this is the game over. When the lives become 0, this game should turn to this backdrop, this background image. So I will say when wait until lives is equals to 0 and change the background to switch backdrop to blue sky 2. Let's see what happens. But it is not changing to the original one. So we have to give that instruction as well, switch backdrop to the first one when I press the green flag. Now I'll purposely change, I'll choose to game over. Yeah, lives become 0, game gets over. And everything stops, even you can't move the goblin. Sorry, you can't even see the ball is falling down. Ball even stop, right? So this is the use of the stop all command. But one thing is missing here. If you have observed, one thing is still missing. That is the score part. We have not written anything related to the score. As we are playing the game, we are we are much interested in the scoring part as well, right? So to show the score, we have to make one more variable, and we can name it score. Now the score is 0, but it should increase. अभी score कब increase होना चाहिए? When it touches the brown surface. When balloon falls down and it touches the brown surface without touching the goblin, then the score should increase by 5. So I will write down that first we have to set it to 0. Initially, whenever we start the game, the score is always set to 0, right? So set score 0 and change the score by 5 when it touches the brown surface. So the brown surface command, that condition is here. If touching brown, then set X, set Y and change the score by 5. Now let's see. I'll keep on moving the goblin. As soon as it touches the goblin, the lives get -1. If balloon touches the surface, the score increases. If lives become 0, the game gets over. Right? So this is how we create games in this platform. So I would like to ask one thing. In my childhood, I used to play that Mario and that Snake game. right. So the same technique they used in creating that kind of apps as well? Yes, yes. As well? The app may be different, but the logic is same. Like even I have that snake game. If you want, I'll show you. Just a second, I need to save this. So when we didn't have that Android phones, no, we had that Nokia and all. Yes, We yes, used yes. to play that Snake game as well. Right. I'll show you the snake game as well. Even I have Mario created using this app. Oh, that's great. Yeah. So I'm press the green flag. Yeah, the length will increase. Yeah, right. So as soon as it touches the apple, the size of the snake increases. Right, right. Right. And this is the code we have done for this whole thing. Okay. And yeah, coming back to our game, bowling ball.
So you can suggest me anything like what do you think, what we can add or what next we can do with the same game. Like I would like to create that Mario kind of game. Even Mar- right Hmm. now, I'm talking about such thing, and the background music is going on in my head only. कि अब वो ऐसे टिडिंग करेगा and then something will come out. Right, right, right. So yeah, definitely we can create Mario also using this application. Even there are other applications where we can create Mario. Even Minecraft also possible, but Minecraft के लिए क्या होता है कि बहुत सारे images, बहुत सारे backgrounds वो heavy हो जाता है पूरा file. अच्छा, Yeah, but we can create. okay, okay. Yes. Hmm. So ये गेम में मुझे क्या लगता है व्हाट आई थिंक अभी ये हो गया एक लेवल कि जैसे ग्रीन फ्लैग प्रेस किया ये बलून्स नीचे गिरे मुझे ये गॉब्लिन थोड़ा स्लो लग रहा है तो व्हाट आई विल डू वो फास्ट मूव नहीं हो रहा है आई गो टू द गॉब्लिन ये जो मैंने मूव 5 स्टेप्स किया था उसको 10 कर देंगे वो थोड़ा फास्ट मूव होगा अदरवाइज इट वाज वेरी स्लो सो अभी फास्ट हो रहा है देखो अभी वो फास्ट मूव भी हो रहा है उससे भी फास्ट हम कर सकते हैं जस्ट हैव टू चेंज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन मूव कमांड इवन बलून्स का स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ना हम फॉर्मेशन यस 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 बलून का भी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे अगर -15 कर देते हैं चेंज y बाय -15 इन बलून्स तो वो फास्ट हो जाएगा सी इट्स फॉलिंग वेरी फास्ट even we can slow it by changing the numbers only in x and y ओके उसके बाद और एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं जैसे कि स्कोर अगर 100 हो जाता है जैसे ही ये 100 स्कोर कर लेता है तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे इफ और यहाँ पे मैं वेट अंटिल ले लेती हूँ ग्रीन फ्लैग वेट अंटिल स्कोर इज इक्वल टू 100 स्कोर का वेरिएबल ले लिया यहाँ पे इक्वल टू 100 देन वी हैव टू स्विच टू अदर बैकग्राउंड तो इसके लिए मुझे और एक बैकग्राउंड चूज करना पड़ेगा एडवांस मतलब ऐसे दिखाने के लिए कि वी हैव वेंट टू द नेक्स्ट लेवल एक प्लेन बैकग्राउंड ले लिया so I will see switch backdrop to the plain blue okay I need to check the name of this it's a blue sky 2 only I'll change it and ये backdrop पे आने के बाद the ball will again fall down यहाँ पे आने के बाद I will say create copies of the balloons clones of the balloons create clone of myself and again when I start as a clone तो ये सारी चीजें डुप्लीकेट कर देंगे लाइव्स रखेंगे 3 नेक्स्ट लेवल पे जाता है ना तो लाइव्स फिर से 3 रखेंगे एंड अगेन इट विल स्टार्ट सो अभी क्या होगा देखते हैं सो अभी वी हैव टू स्कोर 100 ओह माय गॉड आई हैव टू इसका स्पीड कम करना पड़ेगा बलून्स का आई मेक इट 8 और नेक्स्ट लेवल में आई मेक इट 10 तो थोड़ा चैलेंजिंग भी लगेगा ये अभी 100 स्कोर होने के बाद सेकंड लेवल पे मूव हो जाएगा और लाइव्स 3 हो जाएगी फिर से ठीक है हम चेक करने के लिए ना अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 50 कर देती हूँ कि 50 स्कोर होगा सो वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल ये जो खेलने की चीज है ना ये बच्चों को हाँ देखो अभी ये नेक्स्ट लेवल पे मूव हो गया और यहाँ पे 2 बलून्स गिर रहे हैं और अभी ये यहाँ पे स्टक हो गया बिकॉज
अभी ये कंडीशन यहाँ पे फेल होगी, देखो बलून टचिंग ब्राउन सरफेस, क्योंकि ब्राउन सरफेस यहाँ पे है ही नहीं। अभी हम क्या कर सकते हैं, इधर यहाँ पे ब्राउन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं या फिर ये कंडीशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं ऑपरेटर्स में जाके बाय पोजीशन y position of balloon is less than -160, क्योंकि ये -159 है ना, तो उससे अगर कम होती है तो उसको अगेन ऊपर जाना है, अभी फिर से 50 स्कोर करना पड़ेगा। See. अभी सिर्फ you can observe only one balloon is stuck there because that is the original balloon. The remaining the which जो भी अभी फॉल हो रहा है वो तो क्लोन से, बिकॉज हमने यहाँ पे बोल दिया कि आप टू क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ, दैट इज बलून्स के क्लोन करने हैं। और व्हेन दोज बलून्स स्टार्ट एज अ लाइक व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, तो वो बलून्स को सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो कि मैंने ओरिजिनल बॉल को दिया था। बट यहाँ पे ओरिजिनल बॉल को हमने वैसे ही रखा, तो इधर ओरिजिनल बॉल को मुझे बोलना पड़ेगा कि हाइड, तो हमें यहाँ पे कहीं तो भी हाइट डालना पड़ेगा, सो दैट ये ऐसे जो दिख रहा है ना एक बलून यहाँ पे अटका हुआ, वो नहीं दिखेगा, अगर उसको हम हाइड कर देते हैं। तभी ये फिर से फॉल डाउन, नीड टू स्कोर 50। देखो अभी वो एक बलून जो नीचे दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा है अभी। और जैसे ही लाइफ 0 हो जाती है तो इट कम्स बैक टू द गेम ओवर अगेन। ओके, सो दिस इज होल वन कंप्लीट गेम। ऐसे ही हम बहुत सारे गेम्स बना सकते हैं इसमें। ये तो सिर्फ हो गया एक प्लेटफॉर्म, जो कि वी कैन से इट्स अ बिगिनर प्लेटफॉर्म। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम अप लर्निंग्स में पढ़ाते हैं। इसके बाद ऐप डेवलपमेंट भी होता है, ये तो गेम डेवलपमेंट हो गया। इसमें हम एनिमेशन, गेम डेवलपमेंट, इंटरैक्टिव स्टोरीज बना सकते हैं। फिर होता है दूसरा प्लेटफॉर्म है, उस पर हम एप्स बना सकते हैं। तीसरा कोर्स हमारा है जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग का है, जहाँ पे यू कैन क्रिएट फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट डिजाइनिंग वेबसाइट्स। उसके बाद न्यूली हमने इंट्रोड्यूस किया है एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यूजिंग ब्लॉक बेस्ड। तो वहाँ पे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम पढ़ाते हैं बच्चों को यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म्स, यूजिंग सेम ब्लॉक बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद हमारे पास है पाइथन। पाइथन में भी 2 लेवल्स है, पाइथन बेसिक, पाइथन एडवांस। ओके, फिर उसके बाद वी हैव रोबोटिक्स क्लासेस एज वेल, जहाँ पे वी प्रोवाइड किट्स टू द किड्स एंड kids can come online and learn how to create robots. So उसमें भी 3 से 4 different levels से age group wise. Okay, so hope you all like the session. I'll just share my number if you want to connect me for more details about this coding courses. So we run an institute named Up Learnings, and this is my contact number 9699811070. यस, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस चीज के लिए, क्योंकि समवेयर फ्रॉम लास्ट आई थिंक 1.5 year हम कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे को इस बारे में, बट फाइनली टुडे वी केप्ट दिस सेशन। और ये Yes. बहुत यूजफुल होगा बच्चों के लिए भी, जिस तरह से आपने कहा कि जैसे फेसबुक के जो फाउंडर है या अदर जो भी some kids you have shown that they are earning in lakhs, right? तो Yes, अभी yes. एज है उनकी कि जहाँ वो 6 या 7 क्लास में होंगे, 9 या 10 क्लास में होंगे, बट ये कोडिंग सीखने के वजह से या सच काइंड ऑफ टेक्निक दे आर यूजिंग इन देयर लाइफ इन अर्ली एज, ये उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है। और यही पर्पस को
ध्यान में रखते हुए इवन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने भी ये इनकलकेट किया है उनके करिकुलम में. So definitely Exactly. it is going to be helpful for the students, and the way techniques are there, everything is there, but the way of teaching is very important. जिस तरह से आपने ये सेशन पूरी तरह से लिया और यू वेर लाइक कि पेशेंटली यू आर डूइंग कि हाँ देखो ऐसे कर सकते हैं, इन सच वे हम ऐसे कर सकते हैं. द टेक्निक वॉज वेरी अमेजिंग मैम. आपने जिस तरह से इसे सिखाया ना, द टेक्निक वॉज वेरी वंडरफुल, और आई Thank थिंक you. इट्स गोइंग टू बेनिफिट Actually, आवर स्टूडेंट्स एज वेल. So thank yes, you yes. so much मैम ऑन बिहाफ ऑफ जादवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट. इतने अच्छे से एक नई कंसेप्ट हमारे बच्चों को और इवन हमारे जो एज के हैं, जो पेरेंट्स है, जो स्टाफ है, उन्हें भी ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थैंक यू सो मच मैम. You're welcome. Thank you for giving me opportunity to showcase this coding things to the kids. बेसिकली मुझे ना ये इंटरैक्टिव सेशन होते हैं कोडिंग एंड रोबोटिक्स के, तो एकदम खाली खाली लग रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था आगे से. But somewhere the expected questions you had in your mind. So meanwhile you were solving that questions as well. मतलब आपको यस पता यस. था कि ये क्वेश्चंस आ सकते हाँ. थे बच्चों की तरफ से. तो राइट. आप वो सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे रहे थे. एंड डेफिनेटली वी विल अरेंज वन इंटरैक्टिव सेशन विथ यू मैम. यस यस, डेफिनेटली. So hope you won't mind if we keep such kind of sessions, interactive sessions with you, नेवर माइंड. right? यस. Yeah. थैंक यू. Thank you so much, ma'am, for joining me.